Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are all doing good. Due to some personal problems, हम lecture videos upload नहीं कर पाए थे. But now on we will be continuously uploading lectures. So keep following. And last time हमने बात की थी renewable, non-renewable sources of energy की. So today we will be discussing about renewable sources of energy. So last time जब हमने पढ़ा था, we talked about what is energy or how do we acquire energy and how do we measure it and what is the energy consumption in India. So when we talked about the sources of energy, हमने बताया था energy is mainly of two types. When we discuss it on the basis of sources, on the basis of its replenishment, तो हमने बताया था it is the first is conventional or non-renewable source and the second is non-conventional or renewable source. So last video में हमने बात की थी non-renewable sources की which are limited in quantity, which will run out, and most of these non-renewable sources they were fossil fuel based. For example, coal, petroleum, natural gas, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई एम गिविंग इट्स लिंक इन द आई बटन, यू कैन चेक इट देयर. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज की, जो हमने बताया था कि दीज आर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, दीज आर इनएग्जॉस्टिबल एंड आर इजी टू ऑपरेट. और इसमें हमारा सोलर एनर्जी आता है, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल, बायोमास. दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एंड दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी एग्जामिनेशन, क्योंकि जब कोई ट्रेंड चेंज होता है, व्हेन वी शिफ्टेड टुवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इट बिकम्स अ नॉर्म. तो एग्जाम में भी अगर क्वेश्चंस आएंगे तो मोस्टली इसी बेस्ड आते हैं, करंट अफेयर बेस्ड. तो इस वक्त रिन्यूएबल सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस है, तो क्वेश्चन भी चांसेस हैं कि इससे ही ज़्यादा आए. बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज नहीं पढ़ना है. यू शुड नो अबाउट देम, बट चांसेस आर कि रिन्यूएबल सोर्सेज में क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, वी विल बी डिस्कसिंग देम ऑल वन बाय वन. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव सोलर एनर्जी. सो व्हेन वी टॉक ऑफ सोलर एनर्जी, तो वी टॉक ऑफ एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन. जैसे कि नाम से ही पता चलता है, सोलर एनर्जी, सन से जो हमें एनर्जी मिलती है, दैट इज सोलर एनर्जी. अब सन तब से है जब से दुनिया बनी है, बट व्हाई इज इट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सोलर एनर्जी? क्योंकि विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ह्यूमंस मेड इन्वेंशंस, तो जिसकी वजह से हमने जो सन की जो ये एनर्जी थी, सन रेडिएशन जो सन की है, वी कैपिटलाइज्ड इट एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हमने सोलर सेल्स बनाई, जिनकी वजह से हमने इस एनर्जी को चैनलाइज किया और इसको कन्वर्ट किया इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो हमें अभी ज़रूरत होती है. और मोस्ट ऑफ आवर, इफ वी सी, we have solar based electronic gadgets now. So that energy which is obtained from the radiations of sun is called solar energy. And India being a tropical country हो गई वो country जो tropic region में पाई जाती है, जैसे कि which comes between the two tropics, tropic of Cancer and tropic of Capricorn, which are जो इक्वेटर के नज़दीक कंट्रीज हैं, आसपास में, ऊपर नीचे. these are called tropical countries because they have maximum and these solar radiations. If we compare them with subtropical or polar countries, उनके कंपैरिजन में इनको ज़्यादा solar radiations मिलता है. जैसे कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इंडिया हैज़ अ पीक सोलर रेडिएशन फॉर 300 days. दैट मीन्स 2300 to 3000 आवर्स ऑफ सोलर रेडिएशन एक साल में इंडिया को मिलता है, which is enough for capitalizing solar energy. इसीलिए इंडिया का जो इस वक्त इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, दैट हैज रीच्ड 35.12 गीगावाट्स एंड दिस इज द लेटेस्ट फिगर. अब यहाँ पे एक बात ध्यान से सुने कि दीज फिगर्स, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, व्हाट इज द करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ सोलर पावर इन इंडिया. तो दिस वुड बी योर आंसर, 35.12 गीगावाट्स. हालांकि इंडिया का जो टारगेट था दैट वाज 20 गीगावाट्स टिल 2022, बट इट अचीव्ड इट 4 years बिफोर, यानी 2018 में ही इसने कवर किया था. एंड टुडे वी हैव 35.12 गीगावाट्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी.
और ये सब कब से चेंज हुआ? 2015 में अगर आपको याद होगा पेरिस समिट हुई थी। इट वाज देन जब मच स्ट्रेस वाज गिवन इन क्लाइमेट चेंज, और तब जाके सब कंट्रीज ने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस या गोल्स दिए थे टू कट द कार्बन एमिशंस, और उसी में जो बाकी सारी कंट्रीज थी उन्होंने रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ अपना कंट्रीब्यूशन देने का कहा। और उसमें से बहुत सारे गोल्स ऐसे थे, जैसे कि इंडिया ने कहा कि वी विल डेवलप 175 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बाय 2022, एंड आउट ऑफ दिस 100 गीगावाट्स विल बी ऑफ सोलर एनर्जी। और ये टारगेट इन्वेस्टमेंट फॉर दिस वाज 100 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो दिस इज द होल थिंग जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, whether you are preparing for UPSC, whether you are preparing for NET or any PhD examination or any competitive examination. तो directly when we talk of energy resources, it's a main topic. इसमें से questions आ सकते हैं। India has already established 42 solar parks to promote solar power plants. अगर आपको याद होगा, न्यूज़ में कुछ दिन पहले आया था कि the Indian Prime Minister inaugurated Asia's largest solar power plant in रेवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इज इन रेवा मध्य प्रदेश। मूविंग अहेड, अब 2015 में जब पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी, क्लाइमेट चेंज का हुआ था, तो इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और ये जो इनिशिएटिव है, इट वाज सपोर्टेड बाय 122 कंट्रीज, जो कि सनशाइन कंट्रीज है, जो मैंने बोला था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज आती हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, विच हैव peak solar radiations of 300 days in a year. So they come up with this alliance to promote solar energy. और इंडिया ने इसमें कंसेप्ट दिया था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी कि हमें सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि इट बिकम्स एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स फॉसिल फ्यूल्स, जो कि एनवायरमेंटल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इंडिया की जो कमिटमेंट थी INDC की टू पेरिस क्लाइमेट डील, इट वाज टू रिड्यूस द एमिशंस बाय 33 to 35% बाय 2030। 2005 की लेवल से 33 to 35% कम करना है एमिशन, कार्बन एमिशन। और इसी का एक और गोल था कि टू अचीव 40% ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी, यानी 40% जो एनर्जी इंडिया की होगी दैट वुड बी रिन्यूएबल सोर्सेज से by 2030. This question has come directly in UPSC and in NET examinations, और ये दोबारा चांसेस है एग्जामिनेशन में आने का, यानी कि इंडिया का जो गोल है दैट इज 2030 तक अबाउट 40% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, पावर कैपेसिटी जो इंडिया का होगा दैट वुड बी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी सोलर से होगा, जियोथर्मल, बायोमास, इनको क्यूमुलेटिव यानी मिला के 40% ऑफ द एनर्जी शुड बी फ्रॉम दीज सोर्सेज। मूविंग फॉरवर्ड, अब जब हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड इज सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स, जो मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर्स इसमें यूज होती हैं, क्योंकि सन तो पहले भी था, बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फोटोवोल्टेइक सेल्स, वी वर एबल टू कन्वर्ट दीज सोलर रेडिएशंस इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो सोलर सेल है, इट्स अ सेमीकंडक्टिंग डिवाइस made up of silicon or germanium, mainly made up of silicon. Or when this silicon is exposed to sunlight, it generates electricity. If you can see these panels, these are silicon panels जो कि solar radiation को capture करती हैं, and then they convert this into electricity. This is a clean source of energy. इसमें कोई environment को effect नहीं है. This is renewable and we can install these in remote areas जहाँ पे हमारा जनरल पावर ग्रिड नहीं पहुंचता है, वहां पे हम सीधे सोलर पैनल्स को इफ देयर इज एनफ सनलाइट, हम वहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं सोलर प्लांट को। ओवरऑल दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड ऑफ एनर्जी सोर्सेज नाउ, और हमें भी चाहिए कि सोलर सेल्स का इस्तेमाल करें घर में। इफ वी कैन यूज सोलर बेस्ड इन्वर्टर्स इन आवर होम्स, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत कम आएगा। सोलर बेस्ड गीजर्स आते हैं इफ यू वांट वार्म वाटर इन विंटर्स। So this was solar energy. Now moving forward we have wind energy. जैसे कि सोलर एनर्जी की हमने बात की थी, वैसे ही विंड एनर्जी है। यहाँ पे जो एनर्जी हम लेते हैं दैट कम्स फ्रॉम विंड। विंड इज द मूविंग एयर। India currently ranks 4th in the world in wind power with 37.5 gigawatts of capacity installed.
सो ये याद रखें, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज इंडियाज इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी, दैट इज 37.5 गीगावाट्स, and India ranks fourth in the world in production of wind power. And according to the National Institute of Wind Energy, India has high potential of wind energy. यानी इंडिया को बहुत पोटेंशियल है कि वो विंड एनर्जी जनरेट कर सकता है, और about 97% of this potential is concentrated in states like Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Rajasthan, Madhya Pradesh. Yani mostly Western Ghats, and then coming down to Tamil Nadu up to the Andhra Pradesh. This area has a huge potential for generation of wind electricity. Going back to 2015, when India announced an ambitious goal of installing 175 gigawatts of renewable source of energy by 2020, जिसमें हमारा 100 gigawatts is from solar and 60 gigawatts is from wind energy, because there was a shift to solar power, इसीलिए इसको थोड़ा कम दिया गया था. So wind power amounts for nearly 10% of India's total installed power generation. कभी कभी percentage based question आता है कि what percent of wind power is India's total installed power generation capacity. So you can directly say that 10% of India's total installed power generation capacity comes from wind. So if we compare the states, and the first state that has the huge capacity is Tamil Nadu. Tamil Nadu generates about 9,231.77 megawatts of wind energy, which is about 29. Yani 30% of India's wind power is from Tamil Nadu alone. So if we see these are the wind turbines, windmills. This turbine is connected to a generator, and then they generate electricity. यानी wind से electricity को generate करते हैं. There is no burning, there is no carbon dioxide emission, there is no carbon monoxide emissions. This is clean energy which is environmentally friendly. Third source is tidal energy. When we get energy from tides, tides होती हैं जो लहरें पानी में उठती हैं because of the gravitational force of moon. When moon and earth they attract each other with gravitational force, then this water gets ripples, so that is tides. उससे जो एनर्जी आती है उस फ्लो से, टाइडल फ्लो से जो वाटर चलता है वहां उससे भी हम एनर्जी कैपिटलाइज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. तो दैट इज कॉल्ड एज टाइडल एनर्जी. दैट इज इट्स अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर जहां पे हम एनर्जी टाइड्स से निकालते हैं. और अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की एस्टिमेट्स की बात करते हैं तो द कंट्री हैज अबाउट a potential of about 8,000 megawatts of tidal energy, जिसमें हमारा 7,000 is in Gulf of Cambay जो कि गुजरात में है, and 1,200 megawatts in Gulf of Kutch, and 100 megawatts in Gangetic Delta and in Sundarban region of West Bengal. So these are some of the regions जहाँ पे हम tidal energy को भी utilize कर सकते हैं for generation of electricity. Or the first tidal energy plant was installed and was commissioned in Gujarat in 2015. So you can remember this, and this can come as a direct question and you can answer it. So but there is no tidal energy policy in India because there is a main focus is on solar power production, and after that there is wind power production, and then there is biomass, geothermal. Less focus is given in tidal energy because tidal energy is more pronounced in European countries. They have a huge potential for capitalizing tidal energy. So moving forward, we have geothermal energy. As the name suggests, जैसे कि नाम से पता चलता है, जियो यानी अर्थ, थर्मल हीट, यानी अर्थ की हीट से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं. जो नेचुरल हीट है अर्थ की, विच इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स और हॉट वाटर. तो एज वी नो, जितना हम अर्थ की जो सरफेस है इससे जितना हम अंदर चले जाएंगे उतना टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है. तो द टेम्परेचर ग्रेडियंट, द नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट इज 17 to 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ऑफ डेप्थ. जितना आप नीचे चले जाएंगे उतना आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा. तो वो टेम्परेचर, वो हीट, उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर एनर्जी जनरेशन, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, फॉर जनरेटिंग एनर्जी. So there are four major types of geothermal energy resources. First is hydrothermal. If you can see this, these are hot water springs. This is hot water coming out of the earth. Then we have geopressurized brines. Hot dry rocks we have magma that is inside our earth. All these can be used
to generate energy. See, this is the hot water bed, this is the injection valve. यहाँ से energy आती है, this hot water comes, this gets into this plant, and then you can use it. You can directly use the steam from this to move the turbine, और इससे भी electricity direct generate हो सकती है. So the major geothermal fields, these are situated in circum-Pacific margins या rift zones जो है दुनिया की, East Africa, North Africa और Mediterranean basin of Europe, and across Asia we have geothermal fields. According to Geological Survey of India, there are about 350 geothermal energy locations in India. India has a huge capacity, and इसमें सबसे promising जो है that is Puga Valley in Ladakh, जहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स, अगर आप वहाँ जाएं तो वहाँ पे सीधे जो स्प्रिंग पानी जो बाहर निकलता है, उबलता हुआ पानी, that is too hot, and the estimated potential for geothermal energy in India is 10,000 megawatts. That is 10,000 megawatts. और अगर हम provinces की बात करें, different provinces, there are 7 geothermal provinces in India. Himalayas, जहाँ पे आपका लद्दाख region that comes in Himalayas. Then we have Sohana, that is around Delhi and Rajasthan ridge. Then we have West Coast, Cambay. Cambay is Gulf of Cambay in Gujarat. Then we have Son, Narmada, Tapi. These are 3 river basins of Middle India, and this is called Sonata. Son, Narmada and Tapi. These are the rivers Narmada, Tapi, Son. गोदावरी एंड महानदी बेसिन, दीज आर ऑल्सो जियोथर्मल प्रोविंसेस, जहाँ पे आपके चांसेस हैं जियोथर्मल जो हॉट स्प्रिंग्स है, जहाँ पे ड्राई रॉक्स हैं, यू कैन यूज दैट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. एंड जियोथर्मल एनर्जी को कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज इट फॉर पावर जनरेशन, जो मैंने बताया कि इसकी स्टीम से टर्बाइन चलता है विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी. वी कैन यूज इट फॉर कुकिंग बिकॉज इट इज हॉट. वी कैन यूज इट फॉर स्पेस हीटिंग, जो सेंट्रलाइज्ड हीटिंग होता है. अगर इस पानी को, जैसे कि लद्दाख बहुत ही कोल्ड रीजन है, तो इस पानी को अगर हम निकालें पाइप्स के जरिए, तो विंटर्स में इट कुड बी यूज्ड फॉर स्पेस हीटिंग, यूज इन ग्रीन हाउस कल्टिवेशन, वी कैन यूज इट इन क्रॉप ड्राइंग. सो देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, एंड इंडिया हैज अ ह्यूज पोटेंशियल. कितना? 10,000 megawatts. Moving forward, we have our fifth source, that is biomass. As the name suggests, कि ये जो एनर्जी होती है that is derived from the organic matter of plants and animals. यानी ये एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलता है, उनका जो रेजिड्यू होगा from, it could be from agricultural crops, it could be sewage, it could be industrial residue, it could be forest crops resources, it could be animal residue, it could be municipal waste. All these wastes, these are biomass sources. So we can use these sources to generate energy. So there are different types of energies created through direct firing, यानी combustion, co-firing, pyrolysis, gasification या anaerobic decomposition. जैसे कि most common इनमें होगा जो rural areas में पाया जाता है इन्हें, that is anaerobic decomposition. Pits बना के हम decompose करते हैं अपने waste को, and then we get biogas. That is mostly used in India in rural areas. Biomass is the only renewable source of energy that can be converted into liquid biofuels. इससे हम ethanol बना सकते हैं, biodiesel बना सकते हैं, which is also an efficient source of energy when we compare it to the normal diesel. And biomass is also rich in hydrogen. तो जब ये हाइड्रोजन इसमें पाया जाता है, तो वी कैन केमिकली एक्सट्रैक्ट दैट हाइड्रोजन एंड जनरेट पावर फ्रॉम इट. हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का नाम आपने सुना होगा. तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड व्हीकल्स भी आती हैं, तो दैट इज मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल सेल, हाइड्रोजन. सो वी कैन गेट हाइड्रोजन फ्रॉम बायोमास एज वेल. मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया हैज अ पोटेंशियल ऑफ अबाउट 18 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम बायोमास. सो रिमेंबर ऑल दिस फिगर्स. जितने भी फैक्ट्स मैंने बताए इनको नोट करिए, इनको लिखिए, इनको रिवाइज करिए, बिकॉज इनमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं. एंड करंटली अबाउट 32% ऑफ द प्राइमरी एनर्जी यूज्ड इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास. जैसे कि मैंने बताया, रूरल एरियाज में बायोगैस का इस्तेमाल होता है, दैट इज बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द वेस्ट. उसको एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, वहां से हमारा गैस निकलता है, दैट इज बायोगैस. दैट्स अ फ्यूल.
More than 70% of the country's population depends on biomass for its energy needs. And the leading states for biomass power projects are Maharashtra, Uttar Pradesh, Karnataka, which have more than 1 gigawatt of grid interacted biomass power. बाकी जो states हैं which are favorable for this biomass production are Punjab and Bihar. So in states में हम biomass को भी use कर सकते हैं for energy generation. And according to Ministry of New and Renewable Energy, they have set a national target to achieve about 10 gigawatts of installed biomass power by 2022. So you need to remember this also. Okay, Ministry of New and Renewable Energy has set a target of 10 gigawatts of biomass power production by 2022. So ये था about renewable sources of energy. जब हम उस एनर्जी की बात करते हैं जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जो खत्म ना होने वाली हो, which is non exhaustible, which is easy to operate, which is environmentally friendly. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली गिव इट ए थम्स अप, एंड अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको लगातार जो वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स मिलती रहेंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.